Hello everyone. In this lecture series, we are going to discuss machine learning, and we will we will use Python programming language for the implementation part. Basically, machine learning language, machine learning different algorithms, tools, techniques और इसका implementation हम Python के थ्रू देखेंगे. ठीक है, Python programming में हम क्या करेंगे, implement करेंगे. So let's come to the first lecture, and the first lecture we are going to deal with the means working with vectors, matrices, and arrays in NumPy. Now, NumPy क्या है? NumPy is a foundational tool of the Python machine learning stack. NumPy allows for efficient operations on the data structures often used in machine learning. Vectors, matrices, and tensors. So machine learning में ये vectors, matrices, tensors बहुत important है, right? नाउ हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास में प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम ये सारे मैट्रिसेस वेक्टर्स नेचर्स के साथ डील कर सकते हैं. सो फर्स्ट लेट्स कम creating a vector. So I have to tell you that this lecture will totally be theory plus practical combination. Theory तो हम डिस्कस करेंगे और साथ में प्रैक्टिकल देखते हुए जाएंगे. तो पहला जो टास्क है, हाउ वी कैन क्रिएट ए वेक्टर. राइट, प्रॉब्लम क्या है? यू नीड टू क्रिएट ए वेक्टर. नाउ इसके लिए हम एज यूजुअल हम क्या करेंगे, नामपी को इंपोर्ट करेंगे. इंपोर्ट नामपी एस एनपी, right? Because we use numpy to create a one dimensional array here. Then इसके बाद हम क्या करेंगे, we will create a vector as a row. So np dot array 1 2 3 ये एक array है. ठीक है, और ये हम एनपी एरे बनाया है. एनपी डॉट एरे, एनपी के अंदर ए फंक्शन है जिसके थ्रू हम एक रो बनाया है, पार्टिकुलरली एक वन है रो, right? And we keep it in the vector underscore row. The vector underscore row is the identifier where we are placing this array we have created using np.array, right? Now creating a vector as a column, ये तो रो हो गया. तो वेक्टर कॉलम क्या होगा, np.array हमें 1 2 1 फॉलोड बाय कॉमा 2 फॉलोड बाय कॉमा 3. ठीक है, सो एक कॉलम हमने डिफाइन किया और हर एक कॉलम में हमें कितना रोज मिला है, 3. 1 2 3. So let's practically implement this. And I will do this with the help of Anaconda. Anaconda, you all please install. You can see here, this is Anaconda Navigator. Under the Anaconda Navigator, we have Spider. यहाँ आपको दिखाई दे रहा है. तो ये बहुत सारे हैं, एनाकोंडा के अंदर बहुत सारी चीजें. तो मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं यहाँ पे जुपिटर यूज करते हैं, जुपिटर नोटबुक एंड स्पाइडर. तो हम जो प्रैक्टिकल करेंगे स्पाइडर में करेंगे. स्पाइडर हमारा स्टैंडअलोन सिस्टम के साथ काम करेंगे. ठीक है, सो लेट मी ओपन. दिस इज स्पाइडर, ऑलरेडी आई हैव ओपन. सो लेट क्रिएट ए न्यू फाइल. यहाँ जाके यू कैन क्रिएट. सो बेसिकली आई वांट टू नेम it as a say just a minute. हम इसको क्या करेंगे, एक सेकंड यहाँ पे जाएंगे, पे जाके डिफाइन करेंगे कहाँ शो करना है मशीन टॉप, राइट? यूजर्स में आया, जैसे ही आप अपने सिस्टम में डिफाइन करना, मैं यहाँ पे से मशीन लर्निंग का तो अलग से एक फोल्डर बना लिया हूँ. जस्ट a minute. हाँ, here under here autism and here machine learning, let's put here, right? तो इसको हमने वहां स्टेप किया है. और आप एक चीज कर सकते हो, यू कैन डू वन थिंग, कैन गो फॉर दिस, राइट? ओके, just 1 minute. We go to the auth
OTSM. In the OTSM, I will go to the practicals session in the lecture. In the practicals, give a name. Say I have given name ML Pro. Okay. So let me then go the first one. Oh, I have written the code. Let me check. See, this is a row. So simply one row, 1, 2, 3. But this is one column. So there are 3 rows, right? Just wait. Basically, what happened? So you can see here we have written the code here. Vector row np dot array 1 2 t vector column np dot array 1 2 t क्यों 3 लिखा है क्योंकि हर एक में एक एक वैल्यूज है और दे आर डिफरेंट रोज राइट कॉलम वाइज लिखे हमने so let's print this one so you can see it 1 2 3 printed. Now let's print this column. Let's see how it is printed. So you can see here 1 2 2 this column is also been printed. Let's save it. Right. So NumPy's main data structure is the multi-dimensional array. NumPy का जो main data structure है वो क्या है आपका multi-dimensional array. And a vector is just an array with a single dimension. So remember, there may be a question that what is vector? तो वेक्टर क्या है वेक्टर इज जस्ट एन एरे विथ ए सिंगल डायमेंशन एक डायमेंशन है राइट एक ऐसा एरे जिसका ओनली सिंगल डायमेंशन है in order to create a vector we simply create a one dimensional array and just like vectors this can be represented horizontally or vertically horizontally का मतलब क्या होगा row wise और vertically का मतलब column wise ठीक है तो ये हो गई इस पहला एग्जांपल हमने देखा we have created one vector row we have created one vector column and that we have done with the help of np.array. Now next creating a matrix now so our task is our problem is you need to create a matrix. How will do that? So with the help of numpy we can go for creating a two-dimensional array. So सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा import numpy as np then matrix so np dot array है क्योंकि array है ये two dimensional array होगा right so हमें क्या करना है ऐसा बॉक्स दो होता है ये दिख रहा है आपको जो क्या हो जाता है तब टू डायमेंशनल होता है one box I have put and under it 1 2 1 2 and 1 so we have created one matrix to create a matrix we can use be two-dimensional array and in our case 2 columns and 3 rows